आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है इलेक्ट्रो, दिस इज वर्ड स्टार्ट कंबाइंड विथ टू वर्ड्स, वन इज इलेक्ट्रो and another one is chemistry. So electro means is nothing but electric current. Electric current को कहते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो, राइट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है. The word comes from electron, flowing of electron is called as electricity, right? Electric current. And chemistry is called as reactions. Chemistry involves the reactions. So in this electric current, electrical, what is the relation between the electric current and reaction is electric current may be converted into chemical reaction, yeah, chemical reaction may be converted into electric current. Means there is a two possibilities are there. It may be electric current, by using the consuming the electric current we can perform the operation, that is reaction, or if any reaction takes place the electric current is generated. So depending upon the two conditions, depending upon these two conditions, electrochemistry is defined as a two terms. It is divided into two terms. One is electrochemical cells and other one is electrolytic cells. This is the different two parts. Electrochemistry is divided into two parts, that is electrochemical cells and electrolytic cells. In this electrochemical cell, what happens here is there is a little bit different is there. Just it is a inverse to one each other. That is in electrochemical cell, electric current, chemical energy is converted into electrical energy. Electrical energy. That means if any reaction takes place, suppose A plus B, if it is any reaction or any process takes place, it forms some C other one, whichever it is, it gives some electricity. It produces some electricity to us, that is called as chemical energy converted into electrical energy. Second one is, in this one, electrical energy is converted into chemical energy. Electrical energy is converted into chemical energy. That means if you want to perform the react A plus B, you must supply the electric current. Without supplying the electric current, this reactions may not be takes place. That type of process is called as electrolytic cells, and this is called as electrochemical cells. So electrochemical cells, actually electrochemical cells are spontaneous. They will be takes place in the spot. Spontaneous processes. These are non-spontaneous processes. Means what is the difference? Spontaneous matlab it will occur with its own, without any performing that, it will occur with its own. Like suppose you are connecting two chemicals, directly some electricity is passed. By just connecting two chemicals, there will be electricity is passed, it is spontaneous. But upon taking the electrons, chemicals, if you supply electricity, up to you are not supplying the electricity, the chemical may not be takes place, reaction may not be takes place. That's why it is a non-spontaneous, it will not takes its own. So this is some brief difference between the electrochemical cell and electrolytic cell. So first one, discuss about the simple brief discussion about the electrochemical cells. If you go for the electrochemical cells, first of all we discuss what is cell. Here we are using the word as cell, which is called as a cell. Cell is a construction in which anode, two electrodes are there, anode and cathode, both are connected with a wire. Conducting wire is called as a cell. Right? The construction of any two. If it is anode in a one electrolytic solution and cathode in another electrolytic solution and connecting with a wire, electric conducting wire, by using a ammeter, the total setup is called as a cell. Right? That means for electrochemical cell we must require one electrolytic cell, that is container,
and another container in which electrolyte solution is there, and both are connected, both are electric rods are anodes and cathodes are dipped in that cell, and they are connected with electrical wire by using some ammeter. This is the total construction of electrochemical cell. So in this electrochemical cell, we are also saying that as electrochemical cell, the another name for electrochemical cell is galvanic cell. This word mostly used in NCERT, that is galvanic cell. You may not use that electrochemical cell. You use only the word galvanic cell. Both are equal. Galvanization, so zinc deposition. Another one is use other word, that is voltaic cell. We also use the word voltaic cell. This is the two similar names. There is no difference between electrochemical cells and galvanic cell as well as voltaic cell, right? So in this particular example, what happens here is, how can we recognize that the electricity is passed through the chemical solution? Either what is the condition? Are we required two containers for this? Or by using only one container we can produce electricity? So if you this one mind, suppose what if you once again if you differentiate the electrochemical electrolyte cell, in electrolytic cell only one container is used, in which the container electrode, cathode and anode both are dipped in electrolyte solution. But in this we require two different containers. Compulsory we require two different containers. Why? Because if you take only one container, if anode and cathode takes place in this solution, what happens here is, if electricity, one of the solution is converted into another, metal is converted into solution and the metal is deposited on the electrode, but electricity is produced here, but that electricity will not be consumed. That electricity, here also the electricity is produced, but we not consume the electricity because it is completely demolishing this one. You cannot produce the electricity. That's why we require completely two different containers. One is called half cell and another one is second half cell. The first half cell and second one is second half cell. In between two, if you dip the solutions, electrodes, in two different solutions, electrons will be moved from one zone to other zone. Then electricity is, that is means the electrons are moving away from the electrodes, chemical cell. Then electricity is moved from the opposite to the electron moving. You already know that if electrons moving from left to right, electricity moves from right to left. So okay. So for detecting the electricity, how much electricity is produced and how the chemical energy, the electrical energy is produced, we must require two half cells. Without two half cells, we can't determine how much of electricity is produced. That's why in electrochemical cell we are using two different electrodes and saying it as a half cell. Another one is called as another half cell. Right? So in this total setup, if you take the example of, if you explain the example, we are explaining Daniell cell. अगर हम Daniell cell की बात करेंगे, तो Daniell cell के अंदर zinc and zinc sulfate, zinc rod dipped in zinc sulfate and copper rod is dipped in copper sulfate solution. This is the total electrogalvan Daniell cell setup. In this one, what happens? One anode is placed at the left side. It is a mandatory, but every anode must be kept at left side and cathode must be at right side. Cathode must be at right side. Then we can dip the zinc rod because we are taking a zinc sulfate solution in this one. So we can dip the zinc rod, which is act as a anode here, which is negative charge species, and a copper electrode in copper solution. That is copper sulfate solution. And this is both are connected with a ammeter, right? So in this one, if you connect both of these two, it is a spontaneous reaction. Before the connecting both of these two, takes place as such. If you connect, just connecting within the second, the electricity is produced. That means the reaction is spontaneous. We can observe that the ammeter will show some reading. That means some electrons are moving. That means electricity is produced. ये ऐसे दिखता है. So इसमें अंदर और एक हम जो भी use करते हैं, that is one is called as salt bridge. We are also using some salt bridge. Salt bridge भी use करते हैं. इसके भी uses होते हैं salt bridge के. कि salt bridge क्या होता है? तो इसके थोड़े से reactions हैं galvanic cell के. जब हम zinc rod को zinc sulfate में dip करेंगे, तो ये anode की तरह काम करेगा.
तो एनोड पे रिएक्शन होगा जिंक कन्वर्टेड इनटू जिंक +2 बिकॉज ऑफ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन कभी भी एनोड के पास होता है, राइट। सो जिंक +2 की तरह कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर कर, और इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव होंगे थ्रू अमीटर, इधर जा रहे हैं मूविंग। देन यहाँ पे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि Cu+2 है, Cu+2 के फॉर्म में है कॉपर सल्फेट। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करेगा जो एनोड से आ रहे हैं, ये कैथोड है। सो यहाँ पे तो रिडक्शन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर रहा है, गेनिंग। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर मेटल, प्योर कॉपर मेटल। सो इससे आपको यहाँ पे रिएक्शन दिखता है कि जिंक रॉड इसके अंदर कंप्लीटली डिप होकर नीचे गिरते रहता है, मेल्टेड, जिंक रॉड मेल्ट होता रहता है। वी आर क्लियरली ऑब्जर्व एंड आफ्टर सम टाइम वी गेट दैट द कॉपर, एक्स्ट्रा कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड। मतलब इसके अंदर का जो कॉपर सल्फेट था कॉपर की तरह बदल गया और मेटल पर डिपॉजिट हो जाएगा, और इसके अंदर का जो जिंक रॉड था वो डिसोसिएट हो गया और जिंक सल्फेट की तरह मेल्ट हो गया। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव होंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। सो इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेगा कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और कॉपर मेटल बनकर मेटल पर डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह एक रिएक्शन चलता रहेगा। बट थोड़ी देर के बाद क्या होगा, अगर हम साल्ट ब्रिज नहीं यूज करते तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जिंक +2 सारा भर जाएगा क्योंकि जिंक +2 ऑलरेडी इसके अंदर है और एक्स्ट्रा जिंक इसके अंदर से आ रहा है। सो ड्यू टू दिस जिंक इज मैक्सिमम, जिंक की ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगी इसके अंदर, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक। एंड यहाँ से कॉपर सल्फेट जा रहा है तो कॉपर में से सल्फेट में से Cu+2 तो डिपॉजिट हो रहा है, बट SO4-2 वहां पे जाम हो रहा है क्योंकि Cu+2 कम हो गए, चले गए, SO4 ज्यादा हो रहा है। इससे यहाँ पे SO4 की ट्रैफिक जाम हो जाएगी और यहाँ पे जिंक +2 की। इससे क्या होगा, जिंक +2 ज्यादा हो जाने से जिंक +2 करना बंद कर देगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन Z की ज्यादा हो गई, तो Zn बंद कर देगा और कॉपर लेना बंद कर देगा। इससे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा, ये करंट फ्लो होना रुक जाएगा। थोड़ी देर के बाद बैटरी कनेक्ट होना, जो कनेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, वो रुक जाएगा। तो इसको रोकने के लिए, इसको फिर से कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साल्ट ब्रिज को यूज करते हैं। वी कैन यूज दी साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या करता है, साल्ट ब्रिज आल्सो कंटेन ए KCl सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग KCl इन ए साल्ट ब्रिज एज ए, इट इज एक्ट एज ए, इट मस्ट बी इनर्ट इलेक्ट्रोड होना जरूरी है। कैसे जरूरी है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होना जरूरी है क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन से रिएक्ट ना हो, राइट। इनर्ट इलेक्ट्रोड होना जरूरी है। तो ये क्या करेगा, KCl, Cl- इधर जनरेट होंगे और K+ इधर जनरेट हो जाएंगे क्योंकि K+ है तो SO4-2, SO4-2 को वो थोड़े से कैच कर लेगा और SO2-4 को अपनी ओर खींचेगा। इससे SO4 कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इधर Zn+2 को Cl खींचेगा, इससे ट्रैफिक Zn+2 का और कॉपर सल्फेट का ट्रैफिक कम हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होना चालू हो जाएंगे। इसीलिए साल्ट ब्रिज कंपलसरी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, नहीं तो सेल थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा। इसको नहीं रोकना है, कंटिन्यू प्रोसेस करना है तो उनको साल्ट ब्रिज यूज करना जरूरी है। इस तरह ये सारे डैनियल सेल्स अपने बैटरीज में, वहां पे भी सब में होते हैं। जहां जहां हम क्लॉक यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, जितने जगह भी हम यूज कर रहे हैं वैसे प्लेस में आपको ये बैटरीज रखेंगे। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आल्सो यूज्ड एज ए बैटरीज। जिस बैटरी में हम यूज करते हैं वो सारे बैटरीज में भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होते हैं, राइट। This is the brief discussion about the Daniell cell as well as electrochemical cell, right? Sufficient.